So previous year question जे देखिए था 2019 ना question Oceanography part इति हम पढ़ाई थी तारा जति की question है से उड़ा cover करेगा okay तो highest gradient in the continental margin is that तो highest gradient तुम छोड़ पाएगा continental slope है तो in you can say तुम्हारा सेल पे बहुत लेस देन 1 डिग्री तो स्लोप रे ही था मोर सॉफ्टवेयर अधिक पाइबो डीप बाय ग्रेडियंट अदर देन अदर प्लेसेस ऑफ ओशन प्रोविंस so the Milankovitch cycle of the global climatic variation operate over the time scale of dash and dash so Milankovitch cycle तुम्हारा क्लाइमेट ग्लोबल क्लाइमेट चेंज रे कोइ तो क्लाइमेट चेंज रे Milankovitch cycle तीनटा कंडीशन को लेके गोटे होछ अप्रिसिएशन ओब्लिक्विटी एसेंट्रिसिटी सो अप्रिसिएशन होछ तुम्हारा 24000 इयर्स ओब्लिक्विटी होछ के 41000 ईयर एंड एसेंट्रिसिटी 1 लाख इट विल फॉल बिटवीन 20 to 1000 किलो इयर्स The land of sea breeze with because of variation of temperature condition, wind flow from sea to land or land to sea. The sea breeze को sea रो land आड़ू flow करछी, land breeze कले land रो sea आड़ू flow करछी. तो for that condition we require कि non-uniformity in ocean. So it जो अच्छी तुम्हारा barotropic, baroclinic. तो barotropic को इंडिकेट करे कि barotropic flow that occurs at level of constant pressure तो यदि constant pressure maintain होची बा constant density maintain होची बा equal pressure बा equal density maintain होची तो there will be no flow the velocity will be zero यदि barocline को था कोचो तार सेटा unequal condition আছে हला तो सेति में से कंडीशन रे तुम्हारा wind flow करते Geostrophic current it is तुम्हारा current driven ocean current flow करे and the thermohaline circulation जोड़ा कौन थी सेटा होच कौन density of salinity temperature and salinity thermohaline density and temperature and salinity Which form of energy of water molecule is reduced during the ice formation from sea water? Ice sea water formation of the latent heat release में उसे अनुसार तुम्हारा kinetic energy change हो. Diurnal tides in the oceans are produced predominantly by the gas. तो diurnal variation रे sun रा किसी effect ना diurnal variation जो होची gravitational interaction among the earth moon sun requirement होता है so gravitational interaction between earth and moon it is the responsible for diurnal tide the rate of nutrient cycling in open ocean is the highest in क्योंकि तुम्हारा मिक्स्ड लेयर था उसी की अपलिन डाउलिन एक मिक्स होची से सब पे पार्ट रा अधिक कोन न्यूट्रिएंट रिच है ना कोल्ड वाटर हॉट वार्म वाटर जो मीट करे तो जो कोन जगह रे तुम्हारा मिक्स लेयर है माने एटा हाईली न्यूट्रिएंट रिच रीजन रे equipment transport in the northern hemisphere is the direction 90 degree to the right of the wind direction 45 degree 90 degree to the left of the wind direction or in the direction of the wind forcing so equipment transport also follows correlation effect होता है जो देखिए तुम्हारा जो डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तुम्हारा विंड फ्लो करता है ताकि 90 डिग्री रे सब ट्रांसपोर्टेशन हुए इन equipment आज इन सोच तो if it is a northern hemisphere then it will deflect towards the right यदि southern hemisphere है तो it will deflect towards the left because of the Coriolis effect so correct answer will be A directed 90 degree to the right of the wind direction Direction of gas exchange between air and sea is controlled by
So duration of gas exchange. Gas is the exchange जो obviously gas का flow करेगा high concentration low concentration. But gas का movement होची depend upon the concentration gradient. ହେଲା जोटी highly dissolved ହେଇଥିବ ବା high concentration ଥିବ low concentration तो gas will flow from high concentration to low concentration. So direction of gas exchange between air and sea depend upon the concentration gradient. In which of the following basins the highest concentration of dissolved inorganic carbon and nutrients are found? First, what is dissolved inorganic carbonate? तो नॉर्मली ओशन में वो ऑर्गेनिक कार्बोनेट इनऑर्गेनिक कार्बोनेट जो पूरा वो इनऑर्गेनिक एक्वा स्पीसीज में नहीं जाऊं कि कार्बनिक एसिड बाइकार्बोनेट है तो कार्बोनेट एवरा सब कोन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सेटा होची तुमरा अधिक मिलिबा होची कोठी पैसिफिक रे हला डीप पैसिफिक रे तुमरा पैसिफिक पार्ट रे तुमरा अधिक इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट थाय डिसॉल्व इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट तो आंसर होगा तुम्हारा deep Pacific Ocean. Select the following elements in the order from higher to lower residence time in the sea water. So this is the average residence time of elements ocean in तुम्हारा sequence अच्छी है ना NMG LISR sequence अच्छी. So now तो कोटा है increasing order. तो से MG MG तापर BA तापर ऐसे तुम्हारा GA तापर एल्युमिनियम. तो दिस इज द सीक्वेंस MG BA GA एल्युमिनियम. तो आंसर कितना हुआ C. सीधा करेक्ट होगा. The concentration of metal ions in sea water is mainly regulated by mostly concentration of metal ions केंद्र जैसे तुम्हारा adsorption process और scavenging process. Scavenging कौन तुम्हारा क्लोरीन और फ्लोरीन इग्रा सब बचती से माने metal scavenge करते हैं ना तुम्हारा BMS डिपोजिशन हुए कि ये डिपोजिशन सब हुए जेतले हाइड्रोथर्मल फ्लूइड रे तुम्हारा कौन थी sea water अच्छी माने तादरे क्लोरीन फ्लोरीन एगुला सब थाते एंड से माने कोन करते मेटल को स्कैवेज करते बाय फार्मिंग तुम्हारा क्लोरीन कंपाउंड सब फ्लोरीन कंपाउंड प्रोड्यूस करते तो से माने सी वाटर रे कंसंट्रेशन बढ़ांती होची मेटल तासता एडजॉर्प्शन होची. इट इज नॉर्मली कि जोड़ा कि मेटल उरा ओटा थिन लेयर रे तुम्हारा वाटर सरफेस ऊपर भासुथि तो ता कोनती कोन एडजॉर्प्शन. तो से प्रोसेस और स्कैवेंजिंग प्रोसेस दीटा होचन रेस्पोंसिबल for the concentration of metal ions in the sea water. The herbivore in the marine habitat is performed exclusively by Metamorphic. That is the option A. Dugong Dingon. ये हाथी वाला देखा हुआ organism का सेवा. Identify the correct set of demersal fishes. तो डेमिसरल फिशेस उरा होची यूजुअली तुमरा कोन जो ईल वाला देखो ईल देखछ ना ईल पूरा लंबा है के नैरो है हला सेही टाइप रा फिशेस जो फिशेस है ना. तो एटा सेकंड ऑप्शन हबा ई जो एगुरा आछंदी माने सब होचंदी कोन डेमिसरल फिशेस. तो इट इज अ सिंपल डाटा क्वेश्चन मान रखिए. Under anoxic condition manganese is expected in water in the form of anoxic condition manganese को फॉर्म में रहे Mn2 plus एक रहे और Mn2 plus एक anoxic condition. तो ऑक्सीडेशन कंडीशन है तापर चेंज हुए Mn3 plus 2 चेंज MnO. And the compensation depth in the marine ecosystem. Marine compensation depth of marine ecosystem रा तो से जाकर कौन पे First of all, what is compensation depth? So compensation depth होची it is a depth कि where मोर जेति की ऑक्सीजन प्रोडक्शन होत हुआ सेति की यूज हो. That means कि at which the photosynthesis and respiration are equal. है
So at condensation depth, the photosynthesis and the respiration are equal. ता तौर को तुम्हारा availability of light availability कम होगा, तो photosynthesis से होगा नहीं, तो से अनुसारे तुम्हारा respiration टा exceed करियो than photosynthesis. तो तुम्हारा जैसे कि फोटिक जोन अच्छी, तो फोटिक जोन में तुम्हारा फोटोसिंथेसिस टा बहुत अधिक थाए than respiration. हाँ, तो कंपेंसेशन डेप्थ रे सेतमें तो से अनुसार यदि फाइटोप्लैंक्टन कुछ मेन हमर फोटोसिंथेसिस करे, तो फाइटोप्लैंक्टन प्रोडक्शन इज इक्वल टू फाइटोप्लैंक्टन रेस्पिरेशन. तो जेति कि तुमर फाइटोप्लैंक्टन तुमर फोटोसिंथेसिस रे प्रोड्यूस करतो ऑक्सीजन, सेति कि समाने कोन रेस्पिरेशन रे भी यूज करतो. ताकि होची मोर कंपेंसेशन डेप्थ. जदि ता तळु को कि फाइटोप्लैंक्टन गला, तो इट कैन लिव बिलो कंपेंसेशन डेप्थ, बट से कम करे ग्रो करियो हैला, तार ग्रो होबानी हैला कि तारा से रिप्रोड्यूस करि परिबो नहीं. तो फाइटोप्लैंक्टन प्रोडक्शन इक्वल्स टू फाइटोप्लैंक्टन रेस्पिरेशन. Next is the enrichment of dissolved substance in sea surface microlayer is primarily caused by. तो sea surface से तुम्हारा जैसे कि तुम्हारा dissolved substance में enrichment हुए, क्या केमिस्ट हुए, कुछ एरोसोल डिपोजिशन, जो कि एयर रे जो पार्टिकल होते हैं समान डिपोजिट होचंदी ना, बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी जो होची ना, बबल ट्रांसपोर्ट एंड ब्रस्टिंग ना, इवापोरेशन. तो नॉर्मली बबल ट्रांसपोर्ट और ब्रस्टिंग रे होते, तो छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल कम होती ऊपर को राइज करती, तो सेठी मोरा तुम्हारा डिपोजिट होती, जोटा कि ब्रस्टिंग बबल्स होची ओशन सरफेस रे से कोन सॉल्ट हो, बायोलॉजिकल मटेरियल हो, माइक्रो प्लास्टिक हो, ये सब जिनस जमा कर जो कि इवापोरेशन थ्रू एटमॉस्फेयर को रिलीज. सो इटा भी बहुत इंपोर्टेंट जिनस कि ग्लोबल क्लाइमेट पे कि तो इवापोरेशन से माने सॉल्ट ये सब जिनस सब ऊपर को जाए हैला. ता सहित तुमरो ग्रेजुअली जदी टेंपरेचर कोन से अगर अधिक अछि ताले बबल गुरा वर्टिकली ऊपर को आसंती, सेठी ब्रस्ट कर जाए, तो सेठी में ताको बबल ट्रांसपोर्ट भी हुआ जाए. तो এটা হবে তোমার বাবল ট্রান্সপোর্ট এন্ড ব্রস্টিং. Which of the following process will not cause increase in pH of natural surface water? तो आज increase in temperature of surface water. जेते टेम्परेचर बढ़ियो से अनुसार फोटोसिंथेसिस भी अधिक होई परियो. फोटोसिंथेसिस जेते होबो सेते मोरा वाटर रो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, जेते वाटर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होबो सेते पीएच इंक्रीज कर. तो से अनुसार तुम देखा कि पीएच यदि इंक्रीज करछि ताले फोटोसिंथेसिस इंक्रीज कराई परियो, ता साथे इंक्रीजिंग टेम्परेचर सरफेस जो वाटर सरफेस टेम्परेचर बढ़ले से भी इंक्रीज कर. ता साथे जेति कि तुमरा एल्युमिनियम सिलिकेट ना K2O, Na2O जोड़ा ऑर्थोक्लेस्ट अल्बाइड कि तुम्हारा CaO से माने भी ऐड हेले तुम्हारा pH टा इंक्रीज कर. अल्कालाइन रॉक ऐड हैला ताले pH टा इंक्रीज कर. तो Al बियरिंग रॉक पूरा भी अल्कालाइन करियो, तो से माने भी pH इंक्रीज कर. तो गोटे दिन सब जति रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड जति तुम्हारा pH इंक्रीज करछि ताले प्रेसिपिटेशन सेटा को डिक्रीज कर. सो सेट में प्रेसिपिटेशन ऑफ कार्बोनेट्स इट हैव आंसर which will not increase the pH of natural surface water. Firstly, Luke Howard says basically cloud classification. Obviously, Andrew Celsius. Obviously, temperature scale Celsius था करना नहीं. मतलब William Ferrell. तो air circulation देखते जो Ferrell से लोग है छोटा फिलामा. तापरे गुस्ताव कोरेलिस कौन देते डायरेक्शन ऑफ एयर. The answer will be A. Which one of the following is incorrect about the Coriolis process? So Coriolis process is always at right angles to the direction of the airflow. So it is incorrect also. It is not always right angle to the direction of air. The northern hemisphere or southern hemisphere नहीं determine करा है ना. So
So it is affect both the wind speed and direction. Both wind speed और direction का affect करे. It is proportional to wind speed. The strongest poles are non-existent at the equator. एरा देखा पर एरा होची कि correlation velocity is always at right angles to the direction of the air. एरा ठीक है चला. L को right angle जाए हैला. किंतु एटा wind direction को affect करे but speed को affect करे नहीं. तो एटा correct option B होगा हैला. A नहीं. Then dissolved Fe is removed during early estuarine mixing. जोटा कि normally तुम्हारा river जाता है sea रे meet कोच. Beside the increasing redox potential is to gain electron to lose chemical species and lose करिबा कि gain करिया को redox potential पर. From the sea, the removal process is mainly aided by removal process टा का through रे तुम्हारा अधिका you can say कि it is helped by or aided by. So first coagulation, colloids and organic substance, then atmospheric deposition of dust. So basically dissolved Fe removal ले atmospheric dust of किसी role नहीं. Marine suspended metal transport ये biological productivity. तो ताहले हम देखिए पड़ो what are the different processes that are responsible for the removal of dissolved Fe. तो नॉर्मली कि तुमरो जेतबे मिक्सिंग फे रिवर वाटर आउ सी वाटर हला तो सेतबे तुमरो गोटे प्रोसेस पे जा थ्रू रे सी तुमरो एफी टा रिमूव हे हला बा प्रेसिपिटेट हे जाई तो से प्रोसेस को कोन हमें फास्ट होची फ्लोकुलेशन गोटे प्रोसेस तापर सो कोआगुलेशन तापर प्रेसिपिटेशन. फ्लोकुलेशन हो जेतरे सी वाटर रे जति काटन थो दैट मीन न्यूट्रलाइज द नेगेटिव चार्ज आयन जहा नेगेटिव चार्ज आयरन थिबो तको कर न्यूट्रलाइज कर हला न्यूट्रलाइज कला परे जेतबे से न्यूट्रलाइज जो काटायन सहित ताले से अबिका कोन हे परिबो प्रेसिपिटेशन हे परिबो हला सो सेटा भी तुम्हारा प्रोसेस आसी कोन कोआगुलेशन प्रोसेस जोतरे कि सी वाटर टा आयरन टा कोन होची गोटे नेगेटिवली चार्ज सहित कोन कोआगुलेट होची सो दैट के से न्यूट्रलाइज होची तो न्यूट्रलाइज जेतले हे जिवो से कोन प्रेसिपिटेशन हे परिबो. तो डिसॉल्व आयरन टा रिमूव होला तापर से तुमर गोटे नेगेटिव चार्ज सहित कोन हो कोआगुलेट हो बा जोटो काम कोन कोन फ्लोकुलेशन प्रोसेस तापर से कोन होची प्रेसिपिटेट होची तो ई प्रोसेस रे रिमूव होची. तो कोआगुलेशन ऑफ कॉलॉइड एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो आयन हो कि पर्टिकुलर आयन और कार्बोनेट हो कि सब आयन प्रोवाइड करबे कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. तो कोआगुलेशन ऑफ कॉलॉइड्स एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एटा होची तुमर दे विल हेल्प फॉर द रिमूवल ऑफ द डिसॉल्व्ड Fe. Anthropogenic carbon dioxide absorption by ocean would result in anthropogenic carbon dioxide कौन तो देखिए हमारा डिफरेंट सोर्सेस छुआ ह्यूमन कॉजेस छुआ तो हमें जरा कि वेहिकल यूज करछंती फॉसिल फ्यूल बर्न करछंती कि फैक्ट्री चलोछंती कि सीमेंट प्रोडक्शन से टाइम रे आसीबो हला डिफरेंट लैंड यूजेस टू आसीबो तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करछ ताते तो ताते द प्राइमरी सोर्स ऑफ anthropogenic carbon dioxide. So mostly ocean absorbs around 30% of anthropogenic carbon dioxide. जते भी जाए तो 30% से absorb करते हैं. तो सारा इफेक्ट कौन जदि से anthropogenic carbon dioxide absorb करछ तार इफेक्ट होची उसेटा एसिड अधिक होइछ भाई जो तो pH level will decreases हला pH level ला कोन डिक्रीज हो माने ऑब्वियसली ओशन टा अधिक एसिडिक हो तापर ओशन वार्म अधिक हो स्टेल ओशन वार्म हो अब न्यूट्रिएंट फ्लक्सेस पूरा कोन डिक्रीज करे तो सेही जो के अफेक्ट हो लाइसोक्लाइन कोन कि जो डेप्थ रे तुमरो कार्बोनेट सॉल्युबिलिटी टा सब्सटेंशियली इंक्रीज करे जो डेप्थ रो कार्बोनेट सॉल्युबिलिटी टा कोन सब्सटेंशियली इंक्रीज करे
तो यही सब इफेक्ट जो एसिडिटी बढ़ी जीव ताले लाइसोक्लाइन टा कौन सैलोअर लेवल को पळै छै लाइसोक्लाइन टा कौन सैलोअर लेवल को पळै छै तो सेति पे ड्यू टू तुम्हारा absorption of anthropogenic carbon dioxide lysocline will be towards the shallower level. This comes to dissolve oxygen gradually increase with depth below the oxygen minimum concentration. तो जगह oxygen का minimum रोचे ता तौर को dissolve oxygen का gradually increase करे. The increase in deep water is mainly associated with the following water mass. तो water mass का अधिक increase करे. तो obviously हमें जितने बड़े surfacial व shallower region को देखो चल तो shallower region में organism बहुत थांते तो हम oxygen सब को absorb करते हैं. तो जो जगह रे तुम्हारा lesser amount रो organism थिबे से जगह रे oxygen टा कम यूज हो. राइट. तो oxygen minimum zone कौन? तो oxygen minimum zone होची कि normally जो zone पर्यंत oxygen टा तुम्हारा minimum amount रो था तापर increase कर. up to तमे 100 to 200 मीटर पर पाइबो oxygen minimum zone रो boundary तापर oxygen टा increase करी. राइट. कौन पाई dissolve oxygen increase करे जेते तुम्हारा डेप्थ को जीवा सेते टेम्परेचर लो होगी सेते कौन टेम्परेचर लो और जेते लो टेम्परेचर solubility of oxygen will increase. Low temperature will increase the solubility of oxygen. तापर तळु गले प्रेशर इंक्रीज कर तो बोल कौन प्रेशर इंक्रीज कर वाटर कोल्डर प्रेशर इंक्रीज करियो काने कोल्डर वाटर बेसी हेवी रही तन प्रेशर इंक्रीज करबा जोटा कि आल्सो इंक्रीज द solubility of oxygen. तापर बेसी डेप्थ कले ऑर्गेनिज्म भी नथबे बेसी डेप्थ ऑर्गेनिज्म जेतु नथि ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन करियो के नथबे तो सेति पे भी इंक्रीज करी तो सेति पे तुम्हारा ऑक्सीजन मिनिमम जोन होची ता ओएमजेड ता कोन अप टू 100 टू 200 मीटर पर अछि तापर ग्रेजुअली इंक्रीज करी तो एते कंडीशन जेते कोल्डर वाटर हबा जेते लेस ऑर्गेनिज्म हबे सेते अधिक डिसॉल्व ऑक्सीजन पाए सो दैट इज द बेस्ट suited condition for Antarctic केना एटा होची कि तुम्हारा खास तो होची बहुत कोल्डर वाटर ता से तो ऑर्गेनिज्म बहुत लेस था तो एटा कोन सी which fraction of the total dissolved organic matter in sea water can be decomposed by bacteria labile total residual refractory labile माने जोटा इजीली चेंज होई बा इजीली डिकंपोज होई जाय पारे जो ऑर्गेनिज्म पूरा है ना टोटल तो टोटल डिसॉल्व ऑर्गेनिक को आउची रेसिडुअल माने जोटा बळकार रिफ्रैक्टरी माने जोटा दे आर वेरी डिफिकल्ट टू डिकंपोज है तो बैक्टीरिया सबले जोटा इजीली डिकंपोज होची ताको ही डिकंपोज करे पे सेते कोठा लाबिली पार्ट जोटा अछि जोटा इजीली चेंज हेबो इजीली डिकंपोज हो सेगुरा बैक्टीरिया थ्रू डिकंपोज हो. The dissolved nitrate in the subsurface water in between 100 to 1000 meter is lower in the Arabian Sea than that in the Bay of Bengal. So what is the reason? Oxidation of nitrate, lower oxidation rate, lower organic carbonate load, then occurrence of denitrification. Arabian Sea रे less nitrate rich माने तादर nitrate बाहर जाओ तो बाहर जो nitrate process होची denitrification. तो ऑब्वियसली से जगह डीनाइट्रिफिकेशन होत कोटी आरएन सी तो डीनाइट्रिफिकेशन आरएन सी रे काई पे काई ना तुमरो आरएन सी मतलब डीनाइट्रिफिकेशन होची जोटा प्रोसेस रे तुमरो नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस हुए नाइट्रोजन फिक्सेशन ने जोड़ा ओशन सॉरी एटमॉस्फेयर रो आसे नाइट्रोजन टा सेंति डीनाइट्रिफिकेशन में पुनी लैंड रो एटमॉस्फेयर को पड़े जोटा कि मेजर गोटे कोन ग्रीन हाउस गैस तो आरएन सी रे कोन हुए मोरो ऑक्सीजन मिनिमम जोन टा की बहुत तुम्हारा इजीली अचीव हुए बहुत लेसर डेप्थ रे अचीव हुए तो भाई केना हमर सिटी की मानसून रीजन मानसून पार्ट टा पूरा अर्बन सी टा तो जते बेले तुमर मानसूनल रीजन होची सिटी भी स्ट्रांग अपवेलिंग बहुत स्ट्रांगर होची कोन हमर अर्बन सी तो जेहेतु सेही सब कंडीशन जो न्यूट्रिएंट रिच आ बहुत ऑर्गेनिज्म अधिक सिटी देखा कोठी आरएन सी तो ऑर्गेनिक मैटर जो बहुत लार्ज अमाउंट रो देखा तो ऑक्सीजन रो वैल्यू टा बहुत कमी है तो ऑक्सीजन रो पर्टिकुलर लेवल अछि ता तळ को फॉल करियाला माने नाइट्रिफिकेशन डीनाइट्रिफिकेशन स्टार्ट है
तो जेहेतु ये ऑक्सीजन लेवल बहुत बहुत अधिक फॉल कर बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनिक प्रोडक्टिविटी तो से कौन हो डिनाइट्रिफिकेशन प्रोड्यूस हो जोटा कि बे ऑफ बेंगल से कंडीशन नुहे है तो से तुम डिनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस रे एठू सब नाइट्रोजन लॉस हो तो ये हम तुम अकरेन्स ऑफ डिनाइट्रिफिकेशन आज को तुम आर्गन सी रे लेस डिजॉल्व नाइट्रेट अच्छी क्या तार सब जगह डिनाइट्रिफिकेशन है रिमूव हो जाए So the compensation depth of calcite and aragonite differ from each other because of dash. तो तुम्हारा calcite और aragonite compensation depth राउगी differ करे कारण aragonite रो टिके तुम्हारा जैसे कि तुम्हारा calcite था ताकि lesser depth रे था तो हमें acid कौन तो acid सेटा होती CCD acid aragonite कुछ है ना से easily dissolve कर देता है dissolution तुम्हारा आटू अधिक है तो तार chemical stability तुमरो कैल्शियम कार्बोनेट टू आर्गोनाइट रो केमिकल स्टेबिलिटी लेस हैला सो सेट में आर्गोनाइट होछ को मोर सॉल्युबल हे देन कैल्साइट तो सेट में सेरा लेसर डेप्थ रे सॉल्युबल हे जाय so it will be chemical stability the bleaching of corals is primarily due to तो कोरल हमें जानते हैं कि कोरल ब्लीचिंग पे जो है व्हाइट कलर है ना सेटा ब्लीचिंग ऑफ कोरल का तो कोरल ब्लीचिंग नॉर्मली गोटे नेचुरल प्रोसेस जेतेबे तादरे जो अलगा माने डुएल करथन सिम्बायोटिक अलगा जोटा से माने जेतेबे बाहरी जान सेतेबे कोरलटा कोन है व्हाइट कलर है जाय ताकू कोन कोन कोरल ब्लीचिंग सो कोरल ब्लीचिंग नॉर्मली कोन टेंपरेचर चेंज रे हुई लाइट जेतले काइना कोरल गोटे पर्टिकुलर डेप्थ रे रही परिबो वार्म वाटर रही परिबो है ना तो लाइट तुमर चेंज हो टेंपरेचर चेंज हो न्यूट्रिएंट्स चेंज हो ता जो हे जदि वाटर टा जोटा हम कहंदी कि अधिक वार्मर हे गेला हठात टेंपरेचर बढ़ी गेला तो अलगा गुरा कोरल रही पे कोरल बोले एक्सपेल द अलगा गुरा कोरल बाहरी है ना तो अलगा गुरा कोरल बाहरी गेले माने ताको कहंदी ही ब्लीचिंग ताको कोरल ब्लीचिंग जोटा कि कोरल टा व्हाइट है तो এটা হবে লস অফ সিম্বায়োটিক আলগা so which one of the following set of physical feature essentially supports autotrophic production in the euphotic layer तो euphotic layer होछि हमरा जोटा कि पूरा photic layer photic ही euphotic कहंती तो हमर ऊपर जोटा photic layer कहंती तो 200 मीटर पहुंचा 200 रो 1000 पर हमें dysphotic कहंती हला बा twilight जोन तक पाए आउ जदि 1000 रो तळ गला तको अपोटिक जोन कहंती बा मिडनाइट जोन कहंती हला एवरा डिवीजन कराय तो यूफोटिक जोन है तुम्हारा ऑटोट्रोपिक फाइटोप्लैंक्टन देखांती जोटा कि दैट यूज द एनर्जी फ्रॉम द लाइट ताकि लाइट सोर्स रो एनर्जी करते बा कोन सी इनऑर्गेनिक रिएक्शन थ्रू भी माने एनर्जी रिसीव करते तो जदि ऑटोट्रोपिक पई ई सब कंडीशन रिक्वायर करछि ताले ऑब्वियसली तापे न्यूट्रिएंट्स तापे लाइट तापे टेंपरेचर तीनटा कंडीशन ऑफ फोटोसिंथेसिस तार न्यूट्रिएंट पई आ तार ग्रोथ पई तो ए सब जिंस रिक्वायर्ड कर तो सेत पई सेटा यूफोटिक जोन रे रहबो सेत पई ताको रिक्वायर्ड कंडीशन होछि लाइट अपवेलिंग एंड टेंपरेचर ताले मन रखो आर आंसर बी हबो हला बॉम्बे टॉप कोंती जास्टर मरीना मैक्रो alga ग्रासिलेरिया यूडिलस और सी कुछ एफ पेरेना पिडल्स डी होची जी एलग्रेस जोस्टर मरीना एटा बोलते सॉरी एटा वन हार्पोडन नेफेरस एटा आई आंसरটা বি হবে হলা সরি then also identify the most pragmatic step mankind must take to rejuvenate the dwindling
marine fisheries for socio-economic betterment to fisher communities in the world over. So, illuminate the subsurface water to enhance the primary production. तो तुम्हें तो illuminate करी पर मैंने subsurface को primary production पे what ocean को था कुआप्स है ना तो बेटा possible में troll out all debris सेटा possible में institute wholesome और responsible fishing practice सेटा possible तो एटी तुम्हें यही तुम्हें कौन कर पारे control कर पारे है ना तो देखी कि कौन सी institute की कौन सी गोटे एकेडमिक से सब बने की दूसरे की तुम्हें responsible fishing practice को जहाँ promote करे पारे है ना marine pollution acidification ये सब किसी तुम कर पारे then estuarine circulation in a partly mixed estuary consist तो estuary circulation माने कौन जब तो estuary टा mixed हुए का से था ocean water से था mixed तो obviously समाने कि properly mix है इसमें नॉले कौन different layer produce करीबे तो ताको हमें कौन estuarine circulation करेक्ट सो जते बड़े रिवर टा मीट करछि सी वाटर को तुम्हारा वेव टाइड ए सब भी ता सहित रिवर टा एक्सपीरियंस करिवो सो से जो बिकॉज ऑफ आल्सो डिफरेंस बिटवीन द डेंसिटी ऑफ द सी वाटर एंड डेंसिटी ऑफ द रिवर वाटर सो दे कैन सर्कुलेट होला दे कैन प्रोड्यूस डिफरेंट लेयर्स तो दी कंप्लीटली मिक्स्ड इज भी ताल तुम कोनोसी लेयर पाइबो ना यदि पार्शियली मिक्स हेइथिबे ताल तुम दीटा लेयर पाइबो टू लेयर सर्कुलेशन तक पहुंची विथ फ्रेश वाटर ऑन द टॉप लेयर एंड हाई सैलिनिटी वाटर इन द बॉटम लेयर कहना ऑब्वियसली तुमरो जोटा सैलिनिटी वाटर अछि सेटा मोर डेंसर है फ्रेश वाटर ता लेस तो सेतमे सेरा टॉप लेयर रहबो ओटा होची बॉटम लेयर रे राइट particularly completely mix है भला से vertically uniform salinity of fresh water पाइबो हैला अब डिपेंड करे कि केते अमाउंट रो मिक्स होची को जगह मिक्स होची से आंसर प्रोड्यूस then the Arabian Sea cools extensively than the Bay of Bengal is due to the Arabian Sea टा intense upwelling हुए जो जगह upwelling होता वाटर मिक्सिंग हो जते वाटर मिक्सिंग हो माने सेते कोन temperature cooling हवा अधिक तो vehicle vertical stratification and more intense upwelling a dynamic topography map provides the information on the dynamic topographic map map रे देखिबे जो वेदर मैप पूरा सब डायनामिक है ना तो सही टाइप के मैप रे तुम कहां पाइबो so दिया जाए horizontal circulation of water in circulate को तो horizontally तार magnitude flow at different depth तो ये दीटा दिन से दिया जाए कि कौन dynamic topography map है horizontal circulation of waters and magnitude of flow at different depths so Ekman layer represents the balance among the so Ekman flow जो हुए geostrophic current जो flow हुए माने there is a balance between the vertical force and horizontal force so horizontal force हम pressure gradient रुवे vertical force is water depth रुवे हैला तो तांको फ्लो रे तुम बैलेंस है कि फ्लो हुए तो एसे तो प्रेशर ग्रेडियंट रहबो को रिलीज फोर्स रहबो हैला तापरे विस्कोसिटी रहबो हैला एडी विस्कोसिटी रहबो इगा सब जाको अफेक्ट करिवे गुटे होची एकमन लेयर तो ऑप्शन ए हैला then for a tropical cyclone in the North Indian Ocean which one of the following applies outside the radius of maximum wind at lower levels माने आय को दूर की जाई के बाहर को कोन तमे देखो हम जतले आय को जते दूर ही जीव आयटा हो कामन बेट तापर वेलोसिटी तापर डिक्रीज करबा आउटसाइड जो शियरिंग फोर्स जो एंटी साइक्लोन क्रिएट हो होवे एंटी साइक्लोन so curve effects contribute to anticyclonic vorticity मैं मन ने आउथरे जोड़ा टॉपिकल साइक्लोनिक प्राइस था डायग्राम देखि था the velocity of tsunami wave is depend upon tsunami wave का पर डिपेंड करे तो तब फॉर्मूला होच कोन रूट ओवर
GD. It depends upon the acceleration due to gravity and depth. And depth, which it is ocean depth. It is not focal depth. So that's why it will not depend upon the epicenter distance or focal depth. कहाँ पर भी dependent upon नहीं. It depends upon the acceleration due to gravity and depth. जैसे तुम्हारा वाइड शोर प्लेटफॉर्म जो दरकार होतो सेठी तुम्हें सी को पैरेलल करिक लीस्ट रेजिस्टेंस रॉक हैला तो तापर सेटा इरोड करिक बट लार्जर प्लेटफॉर्म क्रिएट करबे. सो वाइडेस्ट शोर प्लेटफॉर्म इज जनरली असेस्ड विथ least resistance rock striking parallel to the shore line. Also, oceans in the subtropic region are characterized by नॉर्मली ये कथा कहेगा कि इक्वेटर से अधिक वर्षा है सबट्रॉपिक रे लेस मोर वर्षा तो सेठी प्रेसिपिटेशन कौन लो किंतु इवेपोरेशन ताठो अधिक बुझले तो हाई इवेपोरेशन बट लो प्रेसिपिटेशन. तो 38 नंबर को प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स यदि साउथ टू नॉर्थ अच्छी ताले कुआडू जियोस्फेरिक फ्लो ईस्ट वाडू हम राइट. Which one of the following will not caused by the surface seawater by upwelling? अपवेलिंग हुए पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़िबो कने कार्बन डाइऑक्साइड रा प्रोडक्टिविटी अधिक हबो हला कार्बोनेट रा किंतु जदि इंक्रीज करजे ताले डिक्रीज करिवो नाही. तापर डिक्रीज ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन कने जते अपवेलिंग होबा सेते ऑर्गेनिज्म कोन तुमर ऑक्सीजन रे तुमर ये करिवि यूज करिवे सेते तमर डिसॉल्व ऑक्सीजन डिक्रीज करिवो तापर प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली इंक्रीज करिवो. तो एटा हवा तुमर कोन डिक्रीज ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. Which among the following has the least resident time in sea water? I go through theory amar sort of less होची resident time. एट जेति कर. Ocean conveyor belt refers to. So ocean conveyor belt होची density driven ocean surface. है ना? Ocean conveyor belt होची ना density driven ocean surface. सब जगह ओशन को जे कनेक्ट कर Antarctic intermediate water masses. तो अंटार्कटिक वाटर टा कम कोल्डर हबो ଆଉ less saline हबो. In ocean, remote sensing infrared sensor gives information about sea surface temperature दिए है ना. So the correct sequence of planets in order of increasing surface temperature is Venus is the hottest planet. So obviously, made of the second option choose. So increasing Neptune, Earth, Mercury, Venus. Which one of the following landform is characteristic of fluvial? Fluvial condition in the glaciated region. Characteristic of fluvial region एटा lake होचे fluvial को है ना. Fluvial होचे कोन lake
तो एटा लेक्स हम ग्लासिएटेड रीजन जो लेक ताको फ्लुवियल कहे. Which one of the following statement is correct? Cold are brittle structure but faults are ductile structure. Cold होची ductile, faults are brittle. तो second option टा ठीक है. Cold होची ductile structure but faults are brittle structure. The magnitude of an earthquake increases with decrease in focal depth and epicentral distance. तापरे increase focal depth and decrease with decrease in epicentral distance. Increase with decrease in focal depth and increase in epicentral distance is independent of the epicentral distance and focal depth. Earthquake रो magnitude एटा कहाँ पर भी depend करे. Magnitude तुम्हारा away from the epicenter होके away from the focal depth सब समान रहे. Change हुए. तो magnitude of the earthquake is independent of the epicentral distance and focal depth. Intensity से ना change हुए, but magnitude तो same रहेगा ना. थोड़ा आंसर होगा 4. So which one of the following is the principal source of the arc magnetism? Subducted ocean plate. Which one of the following is principal source of magnetism? Subducted oceanic crust. It is melting. It's providing the magma. The magma provide force. किंतु सेठू डायरेक्ट जाइंग वोल्कानिज्म हो. से जाइंग कोड accumulate होची below the continental crust. सेठी जाइंग accumulate होची. तो सेठी गोटे वेज प्रोड्यूस करन ताको mantle waves पाजे. तो mantle waves टा होची ही सोर्स पर का आर्क मैग्नेटिज्म. और यदि mantle waves वगैरह न था तब तुम सबडक्टेड ओशनिक क्रस्ट भी चूज कर पाते है. तर बोथ भी में कहि पेलो कान ओशनिक क्रस्ट आल्सो द ये बट एटा सब माने ये केस रे कोन कि जेतु मेंटल वेज अछि तल मेंटल वेज तुम चूज कर. So if a P wave passes through a homogeneous medium, then the medium undergoes dash. P wave टा होची डायलेशनल. S wave टा होची नॉन डायलेशनल. S wave टा कोन चेंज द शेप विदाउट चेंजिंग वॉल्यूम. P wave भी चेंज करे शेप जो वॉल्यूम चेंज करे हैला. तो P wave जोटी पास करे माने एडी कोन वॉल्यूम चेंज.